Hello students, welcome back. Now we'll start with the introduction to Euclid's geometry, chapter 5. Now there are some axioms given to us. Euclid's axioms. So there are the 7 axioms given to us. They are the simplest one. First one is things which are equal to the same thing are equal to one another. Means for the first axiom, we'll develop some understanding. Suppose if I have taken AB is equals to BC and BC is equals to suppose CD. So if one thing, this thing is equal to this and this is also equal to another thing. Now from these two we can write AB is equals to CD. So this information is coming from the first axiom, things which are equal to the same thing. Same thing means BC. AB अभी BC के बराबर है और यहाँ पे BC के बराबर क्या CD. तो अभी क्या होगा AB और CD ये भी दोनों बराबर हो गए. Now coming to the second axiom, if equals are added to the equals, the whole are equal. Suppose if I have taken any number, suppose 10 is equals to 10. If we add 2 to both the sides, this will be 10 plus 2, 10 plus 2. So this is 12 is equals to 12. So if two things are equal and equals are added on both the sides, so this is also true for other things. If two things are equal and if equals are subtracted, or if we multiply by the equal number, or if we divide by the equal number, the result will be the same. So now coming to the third axiom, if equals are subtracted from, the remainders will be equal. Suppose if I taken this as 20 is equals to 20, if we subtract 5 from this, so this will be again same. So this is 15 is equals to 15. So this is the second axiom. If two are the equals and the equals are subtracted, the result will be equal. So now coming to the fourth axiom, things which coincide with one another are equal to one another. So अगर दो चीज़ें coincide करेंगी, suppose if I write like AB is equals to AB. Suppose एक मैंने ये point लिया हुआ है A and this is, suppose this is B and this is C. और मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया सपोज D. अभी मैंने अगर बोला हुआ है कि AB इज इक्वल्स टू AB, दिस इज इक्वल्स टू BC एंड B और D दोनों मिड पॉइंट है. तो अभी यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अगर किसी भी एक पार्ट के दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते. मिड पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, B और D दोनों एक ही पॉइंट होंगे. दिस कैन नॉट बी द टू डिफरेंट पॉइंट्स, सो दे विल कोइंसाइड टू ईच अदर. कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट. सपोज एक ये सर्किल मैंने बनाया, दिस इज होल, और इसका एक ये छोटा सा पार्ट बना दिया. सो दिस होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पार्ट. सपोज मैंने बोल दिया एक, आप किसी भी सिटी में एक जो भी सेक्टर होगा, सिटी में क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं ना, तो सेक्टर क्या होगा, हमेशा सिटी से छोटा होगा. और एक सिटी को मैं ले लेता हूँ, किसी भी स्टेट की एक सिटी, वो क्या होगी, पूरे स्टेट की एरिया से क्या होगी, छोटी होगी. सो दिस इज बेस्ड ऑन द सेम. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, things which are double of the same things are equal to one another. If we take a 5 equals to 5, अगर हम डबल करें इनको 5 into 2, this will be again 5 into 2, so this will be 10 equals to 10. So अगर हम कोई भी दो चीज़ें बराबर है उनका डबल करेंगे तो वो भी बराबर होगी. Things which are halved of the same thing will be equal to one another. So if this is suppose 10 equals to 10, if we half it, so 10 by 2 will be equals to 10 by 2, means 5 will be equals to 5. So these are the normal or the simple axioms of the Euclids. Now we will come to our exercise 5.1. So coming to exercise 5.1, first question is
First question, first part. Only one line can pass through a single point. Means we need to find out the true or false and give reasons for this. So for this is infinite, because एक ही पॉइंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस पॉइंट से भी क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास्ड. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही कि नहीं हो रही. सो दिस इज इनफाइनाइट. सो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने ले लिए. सो दिस इज अगेन फॉल्स. So this is false. And first one is also, this is false because infinite number of lines can be passed. Second one is false because see, these are the two distinct points, suppose A and B. So only one line can be drawn from these two distinct points. You cannot draw more than one line. So this is false. Now coming to the third part, a terminated line can be produced infinitely on both the sides. Suppose this is a terminated line A and B. Now this can be produced on both the side infinitely. और इसको अभी मैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ both the sides. So this is true. Now coming to the fourth, if two circles are equal then radii are equal. अभी हमने एक ये सर्किल बनाया. If this is equal to another circle, this circle, suppose this is R2 and this is R1, so obviously R1 will be equals to R2, so this is true. Coming to the fifth part, in figure 5.9, AB is equals to PQ, this is given, and PQ is equals to XY. Then we need to find out whether AB is equals to XY or not. So this is again true, because AB is equals to PQ and PQ is equals to XY, then AB will be equals to XY. This is from first axiom. This is from the first axioms. So what the first axiom states that, now read the statement of the first, the things which are equal to the same things are equal to one another. So this is the first axiom. Now coming to question number 2, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? So question number 1, come to the first part, parallel lines. So what are the parallel lines? But these are the parallel lines whose the perpendicular distance is same everywhere. अगर हम कहीं पर भी perpendicular distance बनाएंगे, that will be the same for this. So we can write for parallel lines, the perpendicular distance between them is same. So perpendicular distance हमेशा क्या होगी, सेम होगी उनके लिए. Now coming to the second part, so इसके लिए अभी क्या हमें दोनों लाइन पता होनी चाहिए, लाइन के पॉइंट पता होनी चाहिए. सो ये पहले लाइन्स और उनके पॉइंट्स डिफाइंड होने चाहिए. सो वी शुड get lines and points. We should get the lines and points defined. Now coming to the second one, perpendicular lines. So perpendicular lines means which are intersecting each other at 90 degree. Means these are the intersecting lines at 90 degree to each other. These are the perpendicular lines, so they are intersecting each other at 90 degree. तो इसके लिए भी अभी क्या, we should know the lines and the points. We should know the lines and point. So किस पॉइंट पे अभी perpendicular बन रहा है, that has to be known. Now third one, line segment. So line segment
लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। सपोज ये मैंने लिखा हुआ ए एंड बी, सो ए बी इज हैविंग द फिक्स्ड लेंथ, इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, सो वी शुड नो द पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, रेडियस ऑफ ए सर्किल। सो रेडियस ऑफ ए सर्किल, दिस इज द distance of center to a point on the circle। सपोज एक मैंने ये सर्किल बनाया, इस पे ये सेंटर है, सेंटर से इस सर्किल पे ये सेंटर लिया, सेंटर से इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी दैट इज ओनली द रेडियस। सो वी नीड टू नो द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन सर्किल। So we should know the center and point on the circle। तो सर्किल पे जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए और सेंटर पता होना चाहिए। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर। सो मीन्स स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटल having four sides equal and each angle 90 degree। So a square has all sides equal and each angle as 90 degree। So स्क्वायर किसको बोलेंगे? जिसके चारों साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। Now coming to question number 3, consider two postulates given below। Given any two distinct point A and B, there exists a third point which is in between A and B। So suppose I have taken these 2 points A and B, and this is the third point C। So C will always lie between A and B। So C हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? A और B के बीच में। Now coming to the second part, there exists at least 3 points that are not on the same line। So there exist 2 parts। Do these postulates contain any defined terms? So yes, these postulates contains defined terms। So as they contains defined terms। Are these postulates consistent? No। These postulates are not consistent। Do they follow the Euclid's postulates? No, they don't follow Euclid's postulates। So for the second case, suppose if there are 2 distinct points, so there will be only one line। Suppose these are the 2 distinct points A and B, so there is only one line passing through these 2 points। So we can write from 2 distinct points, there exists only one line passing through it, passing through them। So these are there is only one line that is passing through these 2 points। Now coming to question number 4th,
if a point C lies between two points A and B such that, suppose अभी हमने A और B को बना लिया and C is over here. Now it is given that AC is equals to BC. Then prove that AC is half of AB and explain by drawing the figure. So this is the figure now. So AC is equals to BC. This is given. If we add, now these are the two equals. If we add equal to it, the net result will be equal. So if we adding AC on both sides, so AC plus AC will be equals to BC plus AC. So this is now on the basis of the axiom 1, which states that if equals are added, to two equals, then result will be equal. So now AC plus AC, this will be twice of AC, and BC plus AC. Now BC plus AC, this will be equals to AB. Now AC, now we can write on dividing by 2. So when two quantities are equal, if they are divided by the same quantity, the net result will be equal. So on dividing by 2, we got AC by, this is twice of AC by 2 is equals to AB by 2. So means this is as per the axiom 4, which states that if two equals are divided by a quantity, then result will be equal. Then results are equal. कि दो क्वांटिटी अगर इक्वल है, उसको अगर हम एक इक्वल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल. सो दिस इज AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. दिस इज प्रूव्ड. तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो भी यूक्लिड्स की कंसर्ट एक्सियोम होगी उसको भी मेंशन करेंगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th. In question 4, point C is called the midpoint of a line. Suppose again we will make the same figure. This is A and B and C is at the midpoint of this. Prove that every line segment has only one midpoint. So suppose if C is the midpoint, then we got AC is equals to BC because C is midpoint. This can be written as first equation. Suppose now D is the midpoint of AB. अभी हमने कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लिया D, कि अभी D पॉइंट क्या है यहाँ पर लाई कर रहा है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर D मिड पॉइंट है AB का, नाउ आई कैन राइट AD विल बी इक्वल्स टू BD सिंस D इज मिड पॉइंट. So if two equals are equal now AD is equals to DB, or we can write this is DB is equals to AD and AC is equals to BC. So from here, if D is the midpoint, now see that D is the midpoint, so we can write now AC is the midpoint. अभी हमने C को midpoint लिया था, क्या लिखा है AC equals to BC, और यहाँ से अभी हमने ये D को midpoint लिया हुआ है. now AD is equals to DB. अभी देखिए ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अगर ये ऐसा है तो ये दोनों ही साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. सो वी कैन से
from axiom 6 it is said that things which are double of the same things are equal to one another. So from 1 and 2 C and D cannot be two different points, therefore C and D coincide, hence a line can have one and only one midpoint. सो एक लाइन का कभी भी एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 5.10 this is the given figure to us, A, and here it is B, then here it is C, and this is D. If AC is equals to BD, this is given to us, then prove that AB is equals to CD. So AC is equals to BD, this is given to us. Now we can add, this is AC is equals to BD. So on subtracting BC को भी हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. सो दिस विल बी AC माइनस BC विल बी इक्वल्स टू BD माइनस BC. मीन्स ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वल क्वांटिटी from two equal quantities, from two equals, the result will be equal. So this is as per axiom 6 we can write, this is axiom 6. So AC, complete AC minus BC will give us AC minus BC. So this will be AB. So AB is equals to BD. This is BD minus BC will be CD. So this is CD now. This is proved. Similarly, we come to the question number 7th. Why the axiom 5 in the list of the Euclid's axiom considered as the universal truth? Because this is universal truth because whole is always greater than the part. Like we can say, for example, we want to note the examples. It is like a state is always greater than a city, or a country is always greater than a state. So इस तरह से अभी हम कोई भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं. So now coming to exercise 5.2, coming to question number 1. How would you rewrite the Euclid's fifth postulate that it would be easier to understand? फिफ्थ पोस्टुलेट, अभी फिफ्थ पोस्टुलेट को पढ़ते हैं एक बार. फिफ्थ पोस्टुलेट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight line makes an angle, interior angle on the same side of it taken together is less than two right angles. अभी सपोज एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, दूसरी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको एक ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है. ये इंटीरियर एंगल हो गया, एक ये हो गया, इधर का ये और ये. अभी बोला है कि इफ the sum of these two interior angles is less than 90 degree, sorry, if it is less than 180 degree, then these lines will
मीट समवेयर, अगर मैं इनको इस तरह से आगे प्रोड्यूस करूंगा सो दे विल मीट समवेयर, so they will be intersecting lines. Now if the sum is more than 180 degree or 180 degree, so अभी हम अगर इनको प्रोड्यूस करेंगे आगे, they will move apart, so they will never meet again. So अगर सम जो है ना इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री से कम है, so it they will meet somewhere, means that will be a case of intersecting lines. अगर उनका सम दोनों ही ये एंगल्स का सम 180 और उससे ज़्यादा है, so they will never meet. Now we'll come to our this question back. So the perpendicular distance between the lines has to be the same, so these has to be the parallel lines actually. So for parallel lines, the perpendicular distance, so for the parallel lines, the perpendicular distance is always same. अगर ये दो मैंने पैरेलल लाइंस को लिया हुआ है ऐसी, सो इनके बीच की ये परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगी, सेम होगी. सो फॉर द टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस. Does the Euclid's fifth postulate imply the existence of the parallel lines? Yes. So this implies the existence of the parallel lines if the sum of if we can write if the sum of interior angles, if the sum of interior angles is 180 degree, then lines are parallel. So this Euclid the fifth postulate, it explains for the existence of the parallel lines. Parallel lines will only be there if the sum of the interior lines, suppose these are the two lines and this is a transverse, so sum of these two interior angles, 1 and 2, it has to be equal to 180 degree, then only there will exist parallel lines. So we have finished our chapter introduction to the Euclid's geometry. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.